हेलो एंड नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, आप हमें जहां से भी सुन रहे हैं। मैं हूं आपकी होस्ट दिव्या एंड वेलकम टू टुडेज लाइव सेशन। So today we are going to discuss about the melasma, the facial pigmentations. So viewers, watch our session on facial pigmentation on Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn and Twitter with our expert insight. So join through your favorite platform and let us know your doubts in the comment box. So let's get started. So for today's session, we have our expert, Dr. Lata Rijhwani. Dr. Lata Rijhwani is a dermatologist. She has done MBBS and postgraduate diploma in pediatrics from RNT Medical College, Udaipur, and postgraduate diploma in dermatology from Cardiff University, UK. So she is currently practicing at Jaipur. So, Dr. Lata, you always bring lots of information to our viewers. It's really nice to meet you virtually again. So, without further ado, let's welcome Dr. Lata Rijhwani. So, hello, ma'am. How are you doing today? Hello, good morning, Divya. A very good morning, and thank you for having me. It's always a pleasure being on this platform with you. Yeah, that's great. So, without any delay, let's dive into the session. So, for today's session, as we are going to discuss about the melasma, so what is melasma, ma'am, and how does a layman identify the condition? Melasma, I don't think anyone is unfamiliar with this. It is a very common complaint, and it is more common in females. It is more common in the brown, the skin that is more whitish or brown, and relatively common in females, but it can also happen in males. And it is very easy to identify the condition. Even patients, most of the time, they come to us and they diagnose themselves rightly कि हमें छाइयाँ हो रही हैं. In Hindi, we call it छाइयाँ or छाई. And so it is not a condition that is difficult to identify, but yes, it is very chronic, and it is very common, and it comes back very often, and very stubborn and challenging to treat. Okay. So, moving further, so what are the types of melasma? See, melasma, it is seen as a brownish or a ash gray pigmentation if it is deeper. And the patient identifies it as brown spots on the face. Usually, it is on the prominent parts of the face that are more exposed to sun, like the cheeks, forehead, chin, sometimes the upper lip. And very rarely, we can also see melasma, especially in the perimenopausal females. We can see it on the extensor part of the forearms. Talking about the types, there are three types. See, skin has a superficial layer, which is epidermis, and a deeper layer. So the melasma, which is epidermal, is more light brownish kind and relatively easier to treat. And the dermal or the deeper melasma, it looks very deep gray or ash gray, and it is very difficult to treat comparatively. And there is a mixed variety. When you have melasma in the upper layer, like the pigment is more in the upper layer as well as in the deeper layers. And it is very important to identify the types, Divya, because that will decide the fate of the treatment, the response to the treatment, and then we can, give some idea to the patient about how they are going to anticipate the results of the treatment. Yeah, thank you, ma'am. You explained it in great depth. So, building on that point, so how is it diagnosed? Yeah, as I said, the diagnosis is not very difficult, but yes, sometimes we have to use tools like Wood's lamp and dermoscopy. And Wood's lamp is basically when we identification is not a problem. As I said, patients को भी समझ में आता है कि छाइयाँ हैं, but then what is the extent or the depth of the disease? Just for us to decide the treatment. We have to do Wood's lamp examination. Apart from that, sometimes we can order blood tests, and we'll talk about it later. Yeah. Yeah. So, now turning our attention to a different aspect, ma'am. So, how commonly does it occur and does it affect male as well? Yeah, as I told, it is more common in females because most common trigger is pregnancy, and so it affects young females. 25 to 40 years is the age group where we can see, and in menopausal age it is less commonly seen. And yes, it affects the males, but 90% of the patients that come to us in the OPD, they are females. Okay, so that means females are more Yeah. affected with men. Okay. So, viewers, before moving further, let me tell you that
eGlobal Doctors is one complete healthcare platform solutions for all your medical related issues and questions. And मजे की बातें है that you have these services available to you at your fingertips without breaking your bank balance and without driving all in the comfort of your living room. So, moving to our next question. So, ma'am, what are the causes and triggering factors of melasma? Yes, see, causes broadly, we can have the major causes, and that is the chief cause is the pregnancy. So, and so much so that the pregnancy melasma has got another term, which is cloasma. Cloasma is basically, it means mask of pregnancy. So, when you get melasma while you are pregnant, it is known as cloasma. And the other cause is family history. So if your grandma or any of your sisters or any females in the family will have melasma, you are more likely to have it. So genetics plays an important role as well. And third, and a very common cause is the UV rays, the sun exposure. So these are the three major causes of melasma. And of course, we have some other triggers, like it has got some association with the thyroid patients. Like if you have hypothyroidism, or you have vitamin D3 deficiency, or even you have iron deficiency. Like we have seen that those ladies who are deficient in iron, who are anemic, they will have more chances of melasma, and they will have more chances of not, like after pregnancy, sometimes the melasma goes away by itself. But if you are iron deficient, you may end up having a chronic melasma. So these are some of the triggers. Then cosmetic overuse, like some of the females, they every time they go and buy the new brands and they keep trying new things on their face, apply this oil, that serum. So cosmetic overuse is also sometimes an important cause of trigger of melasma. Okay. So, ma'am, what are the indications of treatment? See, when patients have melasma, they have tried so many things when they come to us, and most of the times they are asking us, is it curable? And will it come back or no? And if it comes back, then why do we need to treat? So you see, melasma doesn't do any, you don't have any complaint of it. You don't itch, or you just, it's an of aesthetic importance. And especially females who are young, and when they have melasma, they are psychologically very disturbed, their confidence levels are down, and there are few of them who don't bother about it, and they are okay with it. So treatment is necessary just for the cosmetic aspect, or your appearance should improve. So if it is affecting you that much, of course you have to go for treatment. And anyhow, everyone has a right to look good. And so I think that if the treatments are available, then why not go for them? Yeah. So, ma'am, is it completely treatable? Yeah, so then I come to the question which is very commonly asked by the patients. Well, I would say that if you ask me, honestly, it is curable. And but unfortunately, it is one of those stubborn diseases which comes back very often. Like in 50 to 60% of patients, once they stop the treatment, it comes back. So now the question is, if it comes back, why do I need to treat it? Because when it comes back, the intensity or the severity is not the same, and now you know what you have to do. As soon as you see that, okay, my pigmentation is coming back, you have more knowledge about the role of sun protection. And so it is definitely important to treat it. But yes, if you are in touch with your dermatologist on regular basis, it won't come back suddenly, and it will be much lighter. Okay. It can be maintained very nicely. Yeah. तो मैम ऐसा होता है कि अगर एक बार किसी को झाई हो गई है तो वो बार बार आए और मतलब आएगी तो फिर वो कैसे प्रिवेंट कर सकता है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दिव्या, बिकॉज ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा काउंसलिंग सेशन हम लोग, व्हेन द पेशेंट्स कम टू अस, दे हैव टू बी वी हैव टू बी वेरी क्लियर दैट ये प्रॉब्लम जो है बहुत साल से आपको है, बहुत साल और रह भी सकती है, वापस भी आ सकती है, सो दैट उनको बहुत ज्यादा, बट एट द सेम टाइम वो प्रिवेंटेबल है। एंड स्पेशली अगर आपको यूवी रेज जो है, आप बहुत ज्यादा सन एक्सपोज्ड हैं, तो सन प्रोटेक्शन इज द बैकबोन ऑफ द ट्रीटमेंट। उसका प्रॉपर एजुकेशन, लाइक सन प्रोटेक्शन बाय इटसेल्फ नीड्स प्रॉपर, कितना लगाना है, कौन सा लगाना है, कब लगाना है, और सन प्रोटेक्शन के अलावा आपको क्या और प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, कैप पहनना, स्कार्फ पहनना, अम्ब्रेला लेना, एंड
हार्मोनल फैक्टर्स जो फीमेल्स में है, स्पेशली दोज हु आर टेकिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, उनको मेलाज्मा का, अगर प्रेग्नेंट नहीं भी हैं और कुछ ओसी पिल्स ले रहे हैं या कोई हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी चल रही है, वो भी ट्रिगर है, तो आप उसको अवॉइड करें, उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढें। अगर आप आयरन डेफिशिएंट हैं तो करेक्ट योर डेफिशिएंसीज, थायराइड स्टेटस चेक कर लें, विटामिन डी चेक कर लें। जिस चीज पे आपका कंट्रोल है, ऑफ कोर्स जेनेटिक्स इज नॉट इन योर हैंड, बट वॉट एवर फैक्टर्स यू हैव इन कंट्रोल, वी हैव टू एजुकेट देम, नॉट दैट जस्ट कोई आया आपने 2 मिनट में क्रीम लिख के दी, दैट दे कैन बाय फ्रॉम आउटसाइड, दे आर ऑलरेडी डूइंग इट। दूसरी बात, बिना डर्मेटोलॉजिस्ट के अपनी मर्जी से कुछ भी खरीद के लगाना, कभी चेहरे पर एलोवेरा लगा रहे हैं, कभी कोई मेला लाइट लगा रहा है, कोई स्किन लाइट लगा रहा है, दीज आर वेरी रॉन्ग प्रैक्टिसेस, वो आपकी स्किन को और वर्स करेंगे, इरिटेट करेंगे। सो विदाउट अ प्रॉपर नॉलेज एंड प्रॉपर टॉकिंग टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट वो नहीं करें। तो अगर आप इतना सब ध्यान रख सकते हैं तो आई थिंक हाफ द बैटल इज वन, और बाकी का काम दवाई करेगी। या तो मूविंग फर्दर मैम, तो हमें लाइक आपने जैसे बताया, तो क्या-क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस कंडीशन के लिए? हाँ जी, इसमें मेनली देखिए जो बेसिस एज आई टोल्ड, यूवी प्रोटेक्शन इज अ मस्ट। आजकल हर कोई सनस्क्रीन लगा रहा है, एवरीबडी नोज कि सनस्क्रीन क्या होता है, बट प्रॉपर सनस्क्रीन, आई थिंक हमने पहले एक वीडियो बनाया है, एसपीएफ क्या होता है, कितना लगाना चाहिए, कैसे। अगर आप सनस्क्रीन लगा रहे हैं, उससे प्रॉपरली नहीं लगा रहे, रेगुलरली नहीं लगा रहे, गलत सनस्क्रीन लगा रहे हैं, तो आप अपना टाइम और पैसा दोनों वेस्ट कर रहे हैं। सो इट इज बेटर कि आप बिना तो सन प्रोटेक्शन इज द बेसिस। ऑफ कोर्स देन वी हैव स्किन लाइटनिंग क्रीम्स। स्किन लाइटनिंग क्रीम्स दो तरह की होती है, एक हाइड्रोकिनोन बेस्ड, जो मेन इसका जो ट्रीटमेंट है, हाइड्रोकिनोन इज अ ब्लीचिंग एजेंट जो आपकी स्किन को वाइट करता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में अवेलेबल होता है, तो हम पेशेंट की नीड के हिसाब से वी स्टार्ट। देन देयर आर सम नॉन हाइड्रोकिनोन क्रीम जिसमें कोजिक एसिड, नाइसिनामाइड, विटामिन सी, ग्लाइकोलिक एसिड, arbutin, licorice, tetrahydrocurcumin, and there are so many other lightening agents जो हम मेंटेनेंस के फॉर्म पे देते हैं। व्हाट हैपेंस इज 2 से 3 महीने आपकी छाई को बिल्कुल हल्का होने में लगता है एटलीस्ट। उसके बाद हम सारे ट्रीटमेंट्स एकदम बंद नहीं कर देते, हमारा सनस्क्रीन हमेशा चालू रहता है। वी गिव सम मेंटेनेंस क्रीम सो दैट द पिगमेंटेशन डज नॉट बाउंस बैक। नाउ इफ द एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स हमने देखा कि ना तो क्रीम्स इतना अच्छा काम कर रही है, मेलाज्मा इज वर्सनिंग, वी हैव करेक्टेड द डेफिशिएंसीज, आयरन इज गुड, थायराइड नहीं है, कोई ड्रग नहीं चल रहा, कोई कॉस्मेटिक ओवर यूज नहीं है, देन वी कम टू द प्रोसीजरल ट्रीटमेंट्स, जिसमें मेनली आता है केमिकल पील्स एंड लाइट बेस्ड ट्रीटमेंट्स, जिसमें लेजर एंड ऑल दे कम। सो अगर पेशेंट की सपोज समटाइम्स जो लेडीज आती हैं, दे आर गोइंग टू गेट मैरिड और बहुत कुछ लगा चुकी हैं डर्मेटोलॉजिस्ट से प्रॉपरली, कोई फायदा नहीं है, क्विक ट्रीटमेंट चाहिए, देन वी कैन डायरेक्टली गो टू द प्रोसीजरल ट्रीटमेंट प्लस द क्रीम, सो दैट उनको जल्दी भी बेनिफिट मिले। तो केमिकल पील्स भी करते हैं डिफरेंट तरह के। देन देर इज अ लेजर टोनिंग ट्रीटमेंट विच इज नाउ इट इज वेरी पॉपुलर, जो बहुत ही विदाउट एनी डाउन टाइम, और जैसे किसी को एकदम इंस्टेंटली थोड़ा सा चाहिए कि हमें रिजल्ट दिखे, तो वी कैन गो फॉर दैट लेजर ऑल्सो। सो बट लेट योर डर्मेटोलॉजिस्ट, कई बार लोग आते बोलते हैं हमें लेजर करवाना है, हमें क्रीम नहीं चाहिए, आप तो हमारी छाई का लेजर कर दो, हमें ठीक कर दो। नो, इट डजंट वर्क दैट वे, इतना मैजिकल इसमें कुछ भी नहीं है। सो वी हैव टू बी ऑनेस्ट विद द पेशेंट कि क्रीम तो आपको लगाने, देयर इज नो शॉर्टकट कि आप जल्दी लेजर कर दें, बिकॉज लेजर किस में सूट करेगा नहीं करेगा, व्हाट इज योर स्किन टाइप, और क्या आपकी कंडीशन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ मेलाज्मा, डीप है, सुपरफिशियल है, सो लॉट्स ऑफ थिंग्स। सो हमेशा अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को इसके ऊपर सब कुछ छोड़ दें, फॉलो देयर एडवाइस, तो आई थिंक द बेस्ट रिजल्ट्स विल कम ऑफ योर कंडीशन जो भी है। Yeah. Thank you, Dr. Lata, for sharing the treatment available. So, moving further, viewers, as eGlobal Doctors is providing diet consultation, we have variety of featured categories as diabetes remission, detox program, weight loss, child nutrition, gut health, and many more. So we have expert nutrition coaches and ये आपको हेल्प करेंगे आपके डायबिटीज रिवर्स करने में या फिर आपके वेट लॉस में. So and you will see the result for sure. So you can visit www.eglobaldoctors.com and download our application now. So डॉक्टर लता, जैसा कि हमने ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो भी अवेलेबल है मार्केट में वो हमने बात की और वो कम्प्लीटली ट्रीटेबल है कि नहीं. तो आपने जैसे कि क्रीम की बात की, सो एनी ओवर द काउंटर्स क्रीम्स जो पेशेंट यूज कर सकता है, मतलब
डॉक्टर से मिलने से पहले ही या डॉक्टर के बाद वो कौन सी क्रीम्स यूज कर सकते हैं? हाँ, देखिए ये बड़ा कॉमन है कि जब पेशेंट को कोई पिगमेंटेशन होता है तो वो सीधे हमारे पास नहीं आते। 99% ऑफ द टाइम्स दे गो टू द, तो एक तो ठीक है, अगर आप नहीं डायरेक्टली डॉक्टर को दिखाना चाहते या इफ यू थिंक दैट आप कुछ यूज कर सकते हैं, तो जो भी स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम्स को अवॉइड करें। तो जस्ट मेक श्योर कि जो भी क्रीम आप खरीद रहे हैं इट डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ स्टेरॉइड, क्योंकि मेडिकल स्टोर वाले डायरेक्टली आपको बहुत पोटेंट स्टेरॉइड देते हैं जिसमें आपको 1 महीने में लगेगा आप बहुत गोरे हो गए हैं, बट देन एज सून एज यू स्टॉप आपकी स्किन पतली हो जाती है, यू आर मोर सेंसिटिव टू स्किन, आपको पिंपल्स हो जाएंगे। सो जस्ट इंग्रेडिएंट्स में पढ़ें, तो आप स्टेरॉइड और कोशिश करके हाइड्रोक्विनोन, ट्रेटिनोइन, इस तरह के कॉम्बिनेशंस जो हैं वो अवॉइड करें। बट येस, कुछ जो आप ले सकते हैं उसमें कोजिक एसिड बेस्ड क्रीम्स हैं, एंड देर आर नॉन हाइड्रोकिनॉन नॉन स्टेरॉइडल क्रीम्स। और कुछ ऐसी क्रीम्स हैं जिनमें सेफर इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे लिकोरिश है और नायासिनामाइड है, ग्लाइकोलिक एसिड है कम परसेंटेज में, विटामिन सी बेस्ड क्रीम्स आप ले सकते हैं। तो इस तरह की क्रीम्स यू कैन डेफिनेटली, अगर आपका मेलाज्मा बहुत लाइट है, कई बार प्रेगनेंसी के 2-3 महीने तक मेलाज्मा रहता है और वो चला भी जाता है, तो इस केस में इफ यू जस्ट यूज सनस्क्रीन, अ गुड सनस्क्रीन, टेक लॉट ऑफ विटामिन सी और कुछ स्किन लाइटनिंग क्रीम्स जो कोजिक एसिड और ये लिकोरिश बेस्ड हैं, इस तरह के, तो ये फायदा कर भी सकते हैं। बट अगर नहीं ठीक हो रहा तो अपनी मर्जी से दूसरे जो स्ट्रॉन्गर इंग्रेडिएंट्स हैं, जो थोड़े से अग्रेसिवली काम करते हैं, आई थिंक दे नीड टू बी यूज विद कंप्लीट कॉशन, उनको आप नहीं खरीदें। ओके, सो मैम जैसे हमने ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्कस किया, सो आई वांटेड टू आस्क, कोई होम रेमेडी इफेक्टिव होगी इस कंडीशन के लिए जो हम कर सकते हैं? देखिए, होम रेमेडीज मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एनी काइंड ऑफ होम रेमेडी व्हाटसोएवर। सो होम रेमेडीज के फॉर्म में लोग नींबू, टमाटर और कई तरह के एसिडिक जो चीजें लगा के आते हैं, आलू एंड ऑल, एवरीबडी इज पुटिंग, बट मैंने तो उसको ज्यादा बिगड़ते हुए ही देखा है। व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू पुट लेमन फॉर एग्जांपल, देन यू गो आउट इन सन, इवन इफ यू हैव वॉच्ड इट कंप्लीटली, तो जो स्किन का रिएक्शन होता है वो इतना बुरा होता है कि कई बार लोग बिल्कुल जले हुए गालों के साथ आते हैं कि उन्होंने, people are putting weird things, sometimes they put curd, sometimes they mix 2-3 ingredients मिक्सचर में, ये भी नहीं पता चलता कि which ingredient has caused the harm. So I would always say that don't try anything random, जो भी YouTube पे देखा, WhatsApp पे देखा, वो कुछ भी, don't play with your face. Just safe ingredients and very good quality products recommended by a dermatologist, or minimal products. आजकल even youngsters लाइक यू दिव्या, जिनकी बहुत अच्छी स्किन है, वो भी कुछ 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 लगाने का, बिकॉज इंस्टा एंड ऑल ये इतना ज्यादा अट्रैक्टिव मार्केट है, तो सुबह ये लगा रहे हैं, रात को, तो कुछ भी इतना कॉकटेल लगाने की जरूरत नहीं है। एंड नो होम रेमेडी, ईट गुड, होम में जो चीजें हैं, टमाटर लगाने की बजाय उसको खाइए, नींबू लगाने की बजाय एक नींबू का रस निकाल के रोज पी लीजिए, आई थिंक दैट इज मोर बेनिफिशियल व्हाट यू ईट। लगाने से तो नुकसान ही ज्यादा होता है। सो होम रेमेडी ऑलवेज अ नो नो फॉर मी। या, so viewers, if you have any type of skin problem, you can reach out to Dr. Lata at eGlobal Doctors, or if you need any help regarding your health problem. So Dr. Lata, we have discussed everything about the melasma. So can you provide a summary on some practical take-home message for prevention of melasma to those audience who just has joined us? Yeah, the take home messages will be that as soon as you discover that you have any kind of pigmentation, melasma on face, you can just start putting a good sunscreen, and I'm sure many of the people they're already using, if they are, and can start with basic vitamin C improvement, lifestyle improvements. And if you have an access to a dermatologist, it is always ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हो जाए तब आप हमारे पास आए कि हमने सब लगा लिया। थोड़ा सा होने पर भी अगर आप राइट जगह पे चले जाएंगे तो इतना ज्यादा मेहनत आपको भी नहीं करनी पड़ेगी, हमको भी नहीं करनी पड़ेगी, आपका टाइम भी बचेगा। सो आई ऑलवेज, आजकल की दुनिया में इतने एक्सेसिबल हैं डॉक्टर, स्पेशली इंडिया इज अ प्लेस वेयर you can go to any dermatologist same day and उसी टाइम आप दिखा सकते हैं। So the take home will be that don't try anything at home, don't try random things, eat good, have a good sleep, live a stress free life, and always whatever you do under a professional guidance. Yeah.
So thank you, Lata ma'am, for providing lots of information about the topic. I think our audience has got lots of useful information and insights about the melasma. So, viewers, although you might have melasma or have its signs and symptoms, no need to worry as our expert at eGlobal Doctors are here to help you. So, you can visit the website eglobaldoctors.com or download the application now. So, Dr. Lata, it's always a pleasure to have you in our live sessions. You Same, always bring so much of information. same here. The pleasure is mine also, Divya, and thank you for having me. And looking forward to share more knowledge with you Yeah. in future. Sure, ma'am. So, audience, before wrapping up the session, viewers, are you looking for an expert second medical opinion for cancer treatment? Well, look no further because eGlobal Doctors is providing access to top oncologists from across the world. So, thank you, doctor. Thank you, audience. So, it's a wrap.